Good evening, everyone. Warm welcome to you all. Cassidy Megan from Nova Scotia, Canada, founded Epilepsy Awareness Day with the first event held on March 26, 2008. Motivated by her own diagnosis and struggles of living with epilepsy, she realized the importance of everyone understanding this common neurological disorder. She created an avenue for people to learn, engage, and support the public's education of epilepsy, as well as dispel the myths and fears surrounding it. Although the social effects vary from country to country, the stigma and the discrimination that surrounds epilepsy worldwide are often more difficult to overcome than the seizures themselves. People living with epilepsy can be targets of prejudice. The stigma of the disease can discourage people from seeking treatment for symptoms so as to avoid becoming identified with the disease. In an article by WHO, June 2019, people with epilepsy can experience reduced access to educational opportunities, a withholding of the opportunity to obtain a driving license, barriers to enter particular occupations, and reduced access to health and life insurance. In many countries, legislation reflects centuries of misunderstanding about epilepsy. For example, in both China and India, epilepsy is commonly viewed as a reason for prohibiting or annulling marriages. In the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, laws which permitted the annulment of a marriage on the grounds of epilepsy were not amended till 1971. In the United States of America, until the 1970s, it was legal to deny people with seizures access to restaurants, theaters, recreational centers, and other public buildings. When my daughter was in school, she was told to sit at the back of the class because she had a contagious disease. The teacher, not being educated herself, put my daughter at the back of the class and was made to sit there all by herself. We all have got to educate people more about epilepsy, that it is not a disease, it is not contagious, and it is not a psychological disorder. When we were searching for schools, my husband was told by one principal of a renowned school in Pune that we do not take epileptics in our school. I think we could sue her because in India, epilepsy does not fall under the disability category. We also do not have Disability Discrimination Act. So where does that leave those with epilepsy? I'm not ashamed to say that I too fell to some of the myths myself. Ask a parent who sees her child going through 15 and 20 seizures a day. They would understand desperation of doing anything to see their child better. To name some, I changed her name. Astrology, numerology, gemology, but things just got worse. Once, when she had a seizure at a mall, I was told by a passerby that my daughter was possessed. These are our myths. The side effects of meds is another heartache. Once on the internet, when I was looking for side effects of a certain medication that my daughter was on, they showed a person who was a 6-footer holding a printout that ran into pages. Can you imagine what they go through? I do have a list of side effects long enough for my daughter too. She's been battling the side effects of medication for a long time. Sometimes I think the medication is more potent than the epilepsy itself. Today, we have some epilepsy warriors who have lived through some myths and side effects of medication. Sometimes I think the medication is worse than the epilepsy itself. They will share with us their personal experiences and how they have overcome their struggles. Our first speaker today, we have with us Mr. Shrikant. Mr. Shrikant, 71, retired professor and HOD Department of Mining Engineering, BNIT Nagpur.
He also has worked for 21 years in Kolar Gold Mines and National Institute of Rock Mechanics. His elder daughter, born in 1977, developed epilepsy in 1989. Ceaseless efforts by various renowned neurologists, various modes of treatment, including keto diet therapy, was tried in vain. Ultimately, in 2006, a surgery at Central Government's Tertiary Referral Facility, SCTIMIST, Trivandrum, has resulted in complete relief, though still continuing on sustenance dose of AED. She is married and has a 13-year-old son and is currently working with the MNC in Bangalore. Son. Mr. Srikant resides at Nagpur. He will share with us from his vast knowledge and experience about his journey with his daughter and the myths and side effects of meds that he struggled with her. Over to you, sir. Yeah, thank you. The opening remarks have clearly stated the objective and the kind of difficult situations the parents of an epileptic child has to go through. Well, I think we'll start with the myths associated with it. And among the myths, as Karen rightly said, there are people who have a lot of stigma attached to it and compare it, or rather classify it as lunacy, which it certainly is not. And out of 24 hours of time in a day, this patient is more than 23 hours, maybe 23 hours 50 minutes, 23 hours 55 minutes. He is just normal. And it is only those 3, 5, 7, 10 minutes that he undergo the seizure, and this seizure can be precisely defined as a storm of electrical signals in his brain. Because as you would understand, all the communication in the body is happening through electrical signals. That is what a neurologist looks into. So these signals, when they overcrowd, when they become sort of unsystematic, that causes that small interval of 5, 7 minutes, 3 minutes, and that's exactly only a fraction of the person's 24 hours of life in a day that he has this problem. In many cases, it happens only once in a blue moon. It could happen once in a week, or it can even happen any number of times in a day. Now, this lunacy is absolutely a derogatory term that one could use for it. It has nothing to do with it. Now, as it is, the patient at times develops an aura, something that could indicate that the event is coming, and then the main events take place. That event can be anything, but during that tenure, short tenure, he is unaware of the surroundings. And if he is sitting or standing, he may fall down. He just needs a little support during that length of time. He may as well have convulsions.
He may froth from his mouth. Now these are varied symptoms that one comes across, and his body may become stiff. His jaws could be sort of locked, and this leads to a lot of surrounding myths. And at the same time, as caretakers of the epileptics, we have experienced very, very funny and very widely varying circumstances that we are put into, as Karen has described one. And people have a tendency, whenever there is anything, they say, give him water. Now, this water can choke the windpipe of the patient, and it could even result in death if the water had to enter through this into his lungs. So these are the myths that are to be fought. Never attempt to give him any water, even when his seizure has ceased. If the aura is still present, if you can see the person in a confused state and he is blurring out something which is just gibberish, do not attempt to give him anything by his mouth. So that's one. Then another myth that is prevailing, almost every one of us has gone through it, is when the child or adult, when he gets a seizure, they try to make him smell the footwear. Now, this is absolutely foolish. It doesn't have any basis. And I would think people would not do it. And the parents, the caretakers should never allow anyone to try this. Even giving a metallic object in his hands or touching him with a metallic object. It's absolutely foolish. There is no basis for it. Similarly, when his jaw is locked, there would be people, your own well-wishers, they would try to push a spoon in the patient's mouth. Please do not do it. You may break his teeth, you may cause injury. There are times when the tongue is caught in between the teeth. Well, you can't much help. You have to wait for it to pass over, and then you can give him whatever you wish to. Then the worst myth is that the person is possessed. No one knows what is it being possessed. It's just an old thought, and they would rather start advising you, take him to this fellow, this oja, that jadpook wala, and all kinds of things. Please don't do it. It's an absolute myth. I just, at this moment, I want to narrate an incident that happened when I was traveling by train. And I found people moving about and rushing and hushing the things and all that. So I said, what's wrong? So they said there is someone there in the compartment, the other compartment next to the vestibule, and he was having a heart attack and his mouth was frothing. So when they said frothing, and then someone tried to mention that he was having convulsions, I immediately rushed there. And I found someone sitting on his chest and trying to thump it with all his strength.
as if he was trying to revive a heart patient who had ceased to breathe. Now, these are the kinds of people you come across. Their intentions seem to be very genuine, but they are just the enemies. And what I had to do was I just had to tell them, please get little away. And I had to physically lift this fellow from that person's chest. That would be around a 45, 47-year-old person who was in seizure. And everyone would rather want to beat me, manhandle me. What is this going on? He is having a heart attack. I told them, this is not a heart attack. I am a father of an epileptic. I know this is an epileptic seizure. Just let fresh air come in and don't restrict his movements. Because if we try to restrict those convulsive movements, it could lead to a fracture. It could lead to an injury. The patient is unaware what's happening to his body, but you are aware. So please do not allow these. These are the, if I have to narrate, because my daughter faced it for 16 and a half years. And I have gone through the most awkward things in my life because of this. There were occasions when a doctor was calling me a case fit to be admitted into an asylum, and I had to put him in his place. I'll come to it a little later. But then there's another myth that epilepsy is incurable. Just don't get carried away. In no way. Epilepsy is definitely curable. I had to work on it for those 16 and a half, 17 continuous years. From pillar to post, from best neurologist, one to the other to the other, going to CMC Vellore and Nimhans Bangalore and all over. So finally, my search came to an end when I reached Sri Chitra Thirunal Institute, the central government's tertiary referral facility for epilepsy. They are the most competent people. They have the best of the expertise in whole of Asia. Patients come from all over South Asia. And that being a government facility, it is absolutely affordable. Even a surgery may not, this is neurosurgery, it may not cost you more than 20,000-25,000 rupees. And the investigations, they have best of the neurosurgeons serving many other disciplines also. They just had to carry on. And since then, she has been free of any epileptic seizure. And Karen told about her that she is married and she has a son and she has a happy married life. But this is what it is. Anyone who would like, I would suggest, don't give more than 2 years to a neurologist. Don't give more than 2 years. If your child's epileptic seizures are not controlled in 2 years, either look for another better neurologist, neurophysician, or the best alternative today I suggest is take him to Trivandrum.
It's very, very accessible. It's very easy to go there. You can send your reports through email and they give you an opinion, and then they suggest that you could come reach on any Monday, on a given Monday, and stay there for a week. Normally in a week, all the investigations are over and your child then receives the best of the attention. I have not seen them taking more than 10 days. And I have sent as many as 17 cases to Trivandrum. 17. And for your information, none of them has come back with continuing problem. The problem was totally overcome. They have made only some changes in the drugs and their dosages. So there have been number of college boys and girls who have been treated in this manner, and none of them has failed. So this is my earnest request to every one of the parents. If you are in Pune, you are lucky. You have got Yashoda Vakankar, who runs a Samvedana group, and I understand she has made a presentation before you. It is her article in a Marathi magazine, the Diwali issue of 2003 or 2004 in Sakal, that she has about 18-19 pages of article with all her photographs when she was treated and all that. I have the article available with me and I can WhatsApp it. Anyone interested, I can WhatsApp it to his number. And anyone who wants to communicate with me, my number is available with Karen. Otherwise, it is 98-236-23694. I repeat, 98-236-23694. As well, I'll give you my email ID. It is SHRIKANT, that stands for Shrikant 0101 @rediffmail.com. Don't hesitate anytime, but between 9 a.m. and 9 p.m. I'll be very happy to answer or communicate with you, and any information about the facilities available and the hotels available, everything in Trivandrum. Trivandrum is comparatively far, far cheaper place. Very nice place, very cheap place. Now, we'll come to the side effects of AEDs. Again, I thank Karen for putting it in very straightforward and simple manner. Let me assure you, there are no AEDs, the anti-epileptic drugs, which have no side effects. We have gone through them. They affect the whole personality of the patient, the whole fiber of the family, the behavior of the patient. I have just tried to list them. I jotted down. The doctors almost always do not tell you about the side effects. This is one of the worst things in India, especially, that the doctor has no time for you because you have only paid 400, 500 or 800 rupees and you are going to be his staple food for coming 30, 40 years. So please don't mind my rough language, but this is what I have gone through. So these doctors administer drugs telling that they are safe.
but they are not exactly same. One thing. Second, for all the educated parents, and I know every one of you are educated, don't waste time when the doctor writes the prescription. If you can ask him very frankly and always confirm one thing from him, that this drug could be withdrawn if it doesn't help the patient. I'll tell you my personal experience with this. I'll come to it little later if the time permits. Educated parents, just Google with that word, name of the drug, and you will come to 1mg.com or any other website. It will give you the side effects of the drug. But let me assure you, this is not 100% of the side effects. Even the pharmaceutical company may not be knowing many side effects that their drug has. Anyway, so most drugs cause AEDs, cause headache. All of you would have seen. They cause headache, they cause drowsiness, they cause confusion. Confusion is one of the worst things that can happen to a person. Cognition is affected. He is unable to understand things. Your child who was doing very well in academics, you will find his academic performance going down very badly. His intelligence is no more there. And you would be losing your shirt. You would be shouting at him. You would be trying to poke him. No, this is not him. Either the medical condition or the drug-induced condition. These are the ones that are causing. Then it can cause dizziness. This is frequent. It can cause severe depression. And before I forget, let me tell you that it can really cause many behavioral changes in the patient. The child who was very calm and quiet, very obedient, you would find he becomes irritable. He is ready to fight all the time with everyone. It's not him. It's his drug which is forcing him. The irritability becomes part of it. So these are some of them. Many of the drugs affect cognition. Oh my God. We had the worst of the time. Now I forget because it was sometime in 2002 or so that she was put on a drug. And after that, life became unbearable for us. She would fight with us on every small thing. She would start blaming us. And we were wondering what's going wrong in the way we are treating her. We were only protective. Maybe you could call it overprotective. We were trying to shield her. And she was trying to resent it. There was absolute scorn in her words, in her body language towards us. And then both of us, myself and my wife, who is sitting here, we really thought and thought almost about a fortnight. And then we could connect it. The advent of this particular behavioral change, we could correlate with the introduction of that drug. And then I had to decide nothing doing. I have to wean her from that drug. So once that drug was finally totally stopped, tapered, she returned back slowly. It took about 6 months for her to become what she was. So they severely affect the
academic performance, safety, all of you know. There are many drugs like Gardenal. Now this Gardenal was introduced by a famous neurologist from Bangalore. And then we found that my daughter could not walk properly. Her whole gait had changed. It's like a drunkard, left to right and whatever. She could not judge that she had to climb down a step or there is something which is at a higher level. And her life had become miserable. Now, so I requested him that if you have introduced the drug, why don't you help us withdraw it? So the moment I talked of it, he said, you are her father, you want to kill your daughter. Next thing I had to tell him was, being caretakers, being the parents of a patient, we become totally humble and we have absolutely no ego or not even existence before a medico. So I had to tell him, doctor, why didn't you tell us before you introduced the drug? And that really he blew his top. He started abusing me. And then I had to tell my daughter to just go out of the chamber. And I put him in his place. I told him, just because I am an epileptic's father, you can't talk to me in this manner. I have no intention of insulting you, but wherever you have done your post-graduation in England, I have done from the same institution. Only the fields are different. You are a medico and I am an engineer. So then I had to come out of his chamber. I walked out and then a homeopath friend. Homeopath, he was not a qualified homeopath, but not a quack at the same time. So he said, "Arey sahab, aap kyun fikr karte ho? Every drug can be withdrawn. Let us do it like this. एक छोटा फाइल होता है, आप नाखून ये करने के लिए यूज करते हैं, उस तरह का फाइल लीजिए और उससे पहले एक बहुत छोटा सा ये करके इस तरह ग्रेन बाय ग्रेन हम कम करेंगे, अगले 6 महीने साल भर क्यों ना लगे, doesn't matter. Let us withdraw her from this drug. And that's what we had to do. We took around 6 months to wean her from that drug. And we could successfully wean. Now, this is what happens. Gardenal, which can be introduced but cannot be withdrawn. You must be aware. Insist on doctor before he introduces a new drug. Sir, are you sure we'll be able to withdraw it? And then the doctors, the way they, I don't know, they want to abruptly change. So they say, stop this medicine, start this medicine. It is not as easy. It is never these neuromedicines. You should not be withdrawing and introducing a new drug like this. So you have a forum, you can conduct a small 2-hour session on that and you can help lots of parents. So cannot be withdrawn. And unsteadiness in walk was what had become a way of life for her. So grain by grain we withdrew. Then there are drugs which cause severe irritability, as I mentioned to you. So these side effects, apart from these side effects, due to
Sorry, the line is gone. AEs. With Karen's permission, I'll take half a minute or so. See, psychological problems crop up because you as parent are trying to protect your child, injured, to get him or her. In the process, the child feels that his independence is curtailed. It takes a long time to see these things and understand where I have gone wrong. It reaches a final stage when the child starts expressing his hatred towards you. Now, psychologists, I don't know whether they have any explanation and a methodology how one could overcome this and bring it back. But this overprotection, this shielding can lead to this situation also. And that's the side effect or main effect of your being careful, your being protective, your being a parent who wants to shield his kid. So these are the points I just wanted to highlight. I hope I have not gone beyond the subject. And I to all the parents, please feel free if you wish to contact me. The number you could always get from Karen, and not only your kid. If any acquaintance's child has the problem, irrespective of his age, if they have spent more than 2 to 3 years on treatment and still the child is not seizure free, please, please, please take him to Sri Chitra. That's a central government policy institution, and according to your financial condition, they charge you. So if you are earning, I was earning handsome, so then, as I told you, whole treatment cost for me during including investigations, MRI, CT scan, and 3 or 4 days of 24 hours video recording of EEG, and her seizures were recorded and all that. All this included, it cost me only 39,000 rupees way back in 2006. So maybe it could cost today 60,000 or 50,000, not more than that. And if you are from a economically weaker thing, you get a different kind of charges. They extend it to you, not a problem at all. So all the information, please don't hesitate. Thank you so much, That's sir. about. Thank you so much, sir. It Thank was you. very insightful and a lot of information you have shared with us. Absolutely priceless inputs. Thank you so much, and very kind of you to share your phone number and email address with all of us. Thank you so much. Our next speaker this evening is Mrs. Anita Khanna. Mrs. Anita Khanna is 51 years old. She was born in Delhi and brought up in Nagpur. She has done her MCom and MA in English. She is working as a government employee since the last 31 years as a senior SSA in Coal Mines Provident Fund Organization. She suffered from seizures and was an epilepsy patient for 23 years. But since the last 13 years, she has been, well, seizure-free. Her fitness mantra is daily walks, talking and laughing with friends, a little shlokas and mantras, and mainly she tries to be positive and always happy and smiling. Yes, ma'am, I do agree with being positive, and it takes you a long way. So please do share with us your journey. Please unmute yourself, ma'am. Okay now? Yes, please go ahead. Okay. Good evening everyone. नमस्ते सबको. जैसा कि मैम ने बताया कि मैं 27 साल की थी जब मुझे ये बीमारी हुई,
और मेरी बेटी 1 ही साल की थी तब। और असल में मैं बहुत डिसिप्लिन्ड फैमिली से आई थी। घर में 3 बहनें थी, मम्मी-पापा थे। मम्मी तो मेरी गुज़र गई थी जब मेरी शादी हुई। हम लोग हर काम टाइम पर ही रहे। जब मैं यहाँ ससुराल आई तो अनटाइमली होता गया। तो वो जो स्ट्रेस था, जो पति मेरे सिविल इंजीनियर हैं और शाम को जैसे वो लेट आते थे, मैं ऑफ़िस से आती थी, वो लेट आते थे। तो रात को भी साइट से लेट आना, तो वो जो मेरी नींद नहीं पूरी होती थी और सुबह जल्दी उठना, बच्चे को भी देखना, फिर ऑफ़िस जाना, तो वो सब बातें मेरे स्ट्रेसफुल होने लग गई। और शायद यही मेरी बीमारी का शुरू, जैसा कि बोलते हैं, सर ने अभी बताया हमें कि घर वाले तो यही बोलते हैं कि भूत प्रेत की बीमारी है और भूत का साया है। आम लोग पागल हैं बोलेंगे या दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा और पागलपन की बीमारी है और बच्चों को भी लग जाएगी। इसके भरोसे क्या घर या बच्चे छोड़ेंगे, इसको अब अकेले नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है। तो ऐसा सब कहते थे। और कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि ये उम्र में दवाइयाँ कौन खाता है। मेरी मदर इन लॉ ही बोलती थी कि 50 साल तक हमने तो कुछ खाया नहीं कभी, सैरिडोन नहीं खाई और आप अब दवाई लेना शुरू कर दी थी। तो एक गिल्टी फीलिंग आती थी कि अरे बाप रे! मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। ये एक मेरी बहुत गिल्ट जो था मेरे मन में कि अरे बाप रे! मुझे इतनी बड़ी बीमारी लग गई है। तो ऐसा मेरे दिमाग में चलता था। तो वो जो मेरे दिमाग में था कि इलाज होगा, मेरा दिमाग का इलाज होगा, तो स्ट्रेस, मैं डॉक्टर्स 2-3 डॉक्टर्स दे गई नागपुर के, लेकिन मेरा स्ट्रेस कम नहीं हो रहा था। और दवाइयाँ तो शुरू अपना काम करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जब तक हम पॉज़िटिव नहीं रहते तो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं मेनली। तो अपने आप में मैं पता नहीं कब डिप्रेशन में चली जा रही थी और धीरे-धीरे मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा था। इसी बीच मेरा दूसरा बेटा हुआ, घर के हालत भी ठीक हुए, बेटा हुआ तो सभी अच्छा ही लगता है, लड़का हुआ तो जैसे इंडियन मेंटालिटी है कि लड़का हो गया, ये फैमिली पूरी हो गई ऐसा। पहले बेटी थी मेरी, ये सेकंड बेटा था। तो एक बार मेरे पिताजी, हम कहते हैं ना अपनों से ज़्यादा अपने हमें गाड़ते हैं। अपनों से ज़्यादा हमें अपने तंग करते हैं और बदनाम करते हैं। मेरी मदर नहीं है, मैं 22 इयर्स की थी, मेरी मदर गुज़र गई, तो मेरे फादर घर आए। पिताजी मेरे घर आए, ऐसे ही कोई क होगा प्रोग्राम या ऐसे ही आए थे, तो कुछ बातों में बात, सास-ससुर सब बैठे थे, तो उन्होंने बातों में बात की कि इसकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, ये वो। तो मेरे पिताजी ने कहा, "हाँ, इसके मन की बात अगर नहीं हो ना, तो ये बहुत चिल्लाती है, पागलों समान चिल्लाती है।" तो उस दिन मुझे बहुत खराब लगा। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपने फादर को कभी घर नहीं आने दूँगी, जब तक कि मैं ऐसा ना हो जाए या कोई त्योहार हो या कुछ हो, आमना-सामना नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो मेरी शादी ही तोड़ के रहेंगे। मुझे ऐसा लगा। उस दिन के बाद मैंने अपने फादर को घर नहीं आने दिया। दिन बीते और मेरे पति भी 2-4 साल के से नागपुर के बाहर रहने लगे। जब मैं दवाइयाँ खाती थी, तो मुझे बहुत नींद आती थी। ये सर ने अभी बताया कि डिप्रेशन होने लगता है, दवाइयों से बहुत तकलीफ होती है, तो नींद आती थी। तो जब मैं सोती थी तो हर वक़्त ताना, ये तो सोती ही रहती है पूरे टाइम पर। बच्चे भी मेरे हँसी उड़ाते थे कि मम्मी को तो सैटरडे, संडे पूरा टाइम सोने के लिए मिल जाता है। अच्छा है मम्मी सोती हैं पूरा टाइम, इनको तो उठा भी नहीं सकते, शेरनी समान ये तंग हो जाती हैं। तो फिर मैंने बच्चों को बताया कि नहीं, मैं पूरा हफ्ता जब काम करती हूँ, तो मुझे सैटरडे, संडे 2 दिन चाहिए कि मैं आराम करूँ, 2-3 घंटे मुझे चाहिए कि मेरे वो जो स्ट्रेसफुल जो टाइम है, वो मेरा बीत जाए। क्योंकि सुबह से शाम मैं पूरा ऑफ़िस में रहती हूँ, फिर रात खाना बनाना, तो वो टाइम मेरा स्ट्रेस का रहता है। तो मुझे 2-3 घंटे वीक के चाहिए कि मैं आराम करूँ। वो मुझे डॉक्टर ने ही कहा है और स्पेशली मैं डॉक्टर के पास जब जाती थी, तो हस्बैंड को ले जाती थी। तो उनके सामने जब डॉक्टर बात करती थी, तो उन्हें लगता था कि हाँ, भई इसको बीमारी है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, कभी मुझे तंग नहीं किया नींद में। मतलब मैं जब सोई हूँ, कभी मुझे उठाया नहीं। कुछ भी हो जाए, इसकी नींद पूरी हो जाए, फिर उठाएँगे, ऐसा है। तो जब ये सब बात मेरे बच्चों को पता चलने लग गई और हस्बैंड मेरे जब बाहर जाने लग गए, तो ये सब थोड़ा ठीक ही तबीयत रहने लग गई। तो 97 से 2008 तक मोस्टली जैसे 9-10 साल हो गए। जब 2008 में मेरे हस्बैंड बाहर गए,
जॉब के लिए, तो मैं भी जाने लगी, 1 महीने में 2 बार उनके पास जाके आती थी। तब मुझे अच्छा लगने लगा, थोड़ा घर से बाहर हालत होने लगी, तब मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। धीरे-धीरे 2 से 1 करके मैंने बंद कर दी, और ये मेरा सबसे बड़ा गलत डिसीजन हुआ लाइफ का। 2008 में जब मैंने दवाइयाँ बंद की, तो एक बार ऑफिस में मुझे सीज़र हुआ, और वो जब मुझे मिर्गी आई, वो जब मेरा एपिलेप्सी का अटैक आया, तो वो उस वक़्त तक, मतलब 9-10 साल मेरे ऑफिस में किसी को पता नहीं था कि मुझे कोई बीमारी है। मैं इतनी हँसती-खेलती रहती थी, तब सबको पता चला कि मुझे बीमारी है। तब सबको बहुत खराब लगा, और बहुत सहानुभूति से लोग मेरी तरफ देखने लग गए कि अरे, बहुत संवेदना से कि अरे, इसको भी कुछ हो सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है क्या लाइफ में, कि इतनी हँसती-खेलती लड़की को भी कुछ हो सकता है। सब बहुत ध्यान रखने लग गए मेरा कि अरे, तुम ऐसा मत किया करो, बॉस भी काम कम देने लग गए। मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही काम करती रहूँगी, आप मेरी तरफ इतना ये मत करो। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ऐसे डिप्रेशन में जा रही हूँ? मैंने सोचा मैं अब अपने आप को सँवारूँगी। दवाइयाँ तो एक तरफ, जो दवाइयाँ, क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए, अगर आप दवाइयाँ लेते रहेंगे और पॉज़िटिव नहीं रहेंगे, तो फिर आपकी दवाइयाँ कोई काम नहीं करेगी आपकी बॉडी पे। तो उस दिन से मैंने सोचा, व्हेन आई वाज़ 40 इयर्स ओल्ड, उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने आप को हर बात में अपने आप को पूरा टाइम दूँगी, और अपने आप को समय देकर अपना जो भी मेरी इच्छाएँ हैं पूरी करूँगी, अपनी इच्छाओं को मारूँगी नहीं। और दवाइयों के साथ-साथ मेरे दोस्तों ने भी बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। 40 इयर्स की एज में मैंने कार चलाना सीखा। श्लोक तो मेरे को इतनी संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन संस्कृत सीखी, श्लोक सीखी। उसके बाद गायत्री मंत्र मैं रोज़ सुबह-शाम 108 बार बोलती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं बोलती ही हूँ। वो मुझे बहुत पॉज़िटिव एनर्जी देते हैं गायत्री मंत्र। सुबह-शाम मैं 1 घंटा वॉक पर जाती ही हूँ, कुछ भी हो जाए। कितना भी घर बर्बाद हो जाए ऐसा लगता है, लेकिन मुझे वॉक पे जाना ही है, अपना टाइम ये करके मैं जाते एडजस्ट करके। और मैंने इस 43 इयर्स की जब मैं हुई, तो मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, और उसके बहुत सारे 6-7 एग्ज़ाम्स भी पास किए। तो मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं कविताएँ भी लिखती हूँ और मिलती रहती हूँ, मुझे हँसना। और मेन बात है, मैं सबको बोलती हूँ, जो है आप बोलिए, बात करिए, बात करने से सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो सॉल्यूशन लें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम बात करें। बात करने से पता चलता है कि क्या किसको बीमारी है, क्या तकलीफ है, उससे पता चलता है कि क्या आगे कुछ हो सकता है क्या? तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा बात करती हूँ सबसे, और ये करती हूँ कि पहले मुझे शर्म आती थी अपनी बीमारी बताने में, अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ, पर मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे मदद करना अच्छा लगता है, सबके साथ बैठना अच्छा लगता है, सबसे बोलना अच्छा लगता है, टाइमली अपना काम करना ऑफ़िस का, घर का अच्छा लगता है, मैं वो करती हूँ। शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आज मुझे पिछले 13 साल से कोई बीमारी नहीं है, और ये सब बातें मैंने गांठ बाँध ली है। 100% खुश रहने की मैं कोशिश करती हूँ, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं आप सबसे भी यही गुज़ारिश करूँगी कि किसी भी ऐसे बच्चे को, जिसको ऐसी बीमारी हो या तकलीफ हो, या कोई भी ऐसा इंसान आप देखें, तो उनका साथ दीजिए। समाज में एक साथ खड़े रहना, और अपनों से कम लोगों को एक स्तर पर लाना बहुत ज़रूरी है। इससे समाज का उद्धार होता है, और प्रेम तो बढ़ता ही है। हम आपसे बात करते हैं, आप इतने अच्छे लोग मिलते हैं, तो प्यार तो बढ़ता ही है। इनफैक्ट अच्छी बातें भी पता चलती हैं। तो इसीलिए मैंने मेरे फादर, अभी तो मैंने सर से सुना कि 17 साल उन्होंने अपने बच्चों को, आप कारण मैम से भी सुना कि 20 साल से आप मैडम, और एक आपकी शिकन नहीं दिखती, तो आप प्रेरणा हो हमारे लिए। आप प्रेरणा हो कि आप लोगों को देख के हमको एक लगता है, हम तो सोचते हैं हम ही लोग बहुत तकलीफ में हैं, हमसे ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है दुनिया में, और प्यार बाँटना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, और आखिर में तो बस मैं यही करूँगी कि तकदीर को कुछ इस तरह अपनाया है मैंने, तकदीर को कुछ इस तरह अपनाया है मैंने, जो नहीं था तकदीर में, उसे भी बेपनाह चाहा है मैंने। इस बात से मैं खत्म करूँगी। नमस्ते। Thank you, ma'am. That was very Thank you, ma'am. beautiful.
That was a very beautiful share. Thank you so much. I'm sure it'll be very inspiring for a ma'am. lot of us. Thank you, ma'am. We have next with us Mrs. Aboli Batwadekar. Aboli is 48 years old. She was born and brought up in Nagpur. She has done her BSc Maths and completed her PG diploma in computer applications. She worked at CDAC Institute for 4 years, then moved on to work with Dr. Shailesh Pangaonkar for 5 years. Since 2008 to 2015, she worked in Lamrin Solutions as technical support. Simultaneously, till date, she has been working with Rana Pratap Nagar Credit Cooperative Society. She had her first epilepsy attack at the age of 6 months and then started regular attacks at the age of 5 years. She went through neurosurgery on 9th of August 2008 at Jaslok Hospital, Mumbai, and had her last attack on 24th December 2016. She now drives a two-wheeler. That's quite an achievement, ma'am. Please tell us more about your journey, ma'am. You'll have to unmute yourself, please. गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अबोली भाटवड़ेकर। मुझे तकलीफ बहुत बचपन से थी, तभी से यानी किसी को आई विल टॉक इन मराठी। Excuse me, ma'am. Could you keep your camera steady? It's moving a lot. या ओके। मी अबोली भाटवड़ेकर, मी 48 वर्षाची आहे। मला खूप लहानपणापासून त्रास होता, त्याच्यामुळे आई आता कुठे जाऊ नको हे वगैरे राहायचं, पण तरी मी अग्रेसिव्ह असल्यामुळे मी गाडी चालवायची तेव्हापासूनच मी कधी घाबरली नाही गाडी चालवायला किंवा हे। त्याच्यामुळे मला एक वाक्य खूप आवडलेलं एक वाक्य आहे की जेव्हा अंड आतनं तुटतं तेव्हा ते जीवन देतं, जर ते अंड बाहेर न फुटलं तर ते त्याचं म्हणजे एक जीवन मरतं। अशासारखं हे केलं तुम्ही, स्वतःची एनर्जी जर स्ट्रॉंग राहिली तर माणूस घाबरत नाही, घाबरला नाही की सगळं हे होतं। आणि मुख्य सगळ्यात हे सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग, त्याच्यामुळे लोकांकडे लक्ष न दिलेलं आणि आपल्या ह्यानीच आपल्या विश्वात राहिलं तर जास्ती हे राहतं। एपिलेप्सीचा हा त्रास नाही होऊ शकत, आणि तो एक त्रास जरी असला तरी ती एक स्टेज आहे, ते तेवढ्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी असतं। तर तुम्ही तुमचं माइंड जर बिझी ठेवला तर त्याच्याकडे ते डोक्यात सुद्धा लक्षात सुद्धा येणार नाही। माझ्या माहितीप्रमाणे असं आहे की माझं असं मी सतत काही ना काहीतरी क्राफ्टच्या वस्तू बनवायच्या, माझ्या हॉबीज, माझ्या हे करायचं, कुठे शिकायच्या हॉबी होती, त्याच्यामुळे ते शिकत राहिली आणि त्याच्यामुळे मला कधी त्रास नाही झाला। आणि माझ्या आई वडिलांनी केलं, आई खूप ओव्हर प्रोटेक्ट करायचे, तिला असं व्हायचं की नाही अमावस्या पौर्णिमेला नको जाऊ कारण तेव्हा त्रास व्हायचा। थोडासा तो इफेक्ट होता, जसा समुद्रावर होतो पाण्याच्या भरती ओटीचा, तसा ब्लड सर्क्युलेशन वरही होतं असं डॉक्टरने सांगितलं, पण आपण थोडासा त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि थोडं हे केलं तर जास्ती बरं होऊ शकतं। त्याच्यामुळे माझ्या म्हणण्याप्रमाणे सगळ्यात असं की आपण तुम्ही हे कॉशियस राहिले तर त्रास होऊ शकतो। आई वडिलांनी थोडंसं ओव्हर प्रोटेक्शनमुळे जास्ती त्रास होतो, कारण मग ते अरे गोळी नाही घेतली, मग असं ते डोक्यात राहतं की आपण गोळी नाही घेतलेली आहे मग त्रास होईल। गोळी घ्यायची नाही किंवा औषधांकडे दुर्लक्ष करावं असं अपेक्षा नाही, पण माझं सांगणं की सगळ्यात थोडंसं मनाने ते हे राहायला पाहिजे, पक्क राहायला पाहिजे की जे होतंय ते चांगल्यासाठीच होत आहे म्हणून। आणि सगळ्यांसमोर सांगितलं तरी एवढा हे नसतं, कारण मुलगी म्हटलं की ते लग्नाच्या दृष्टीने याच्या दृष्टीने लोक सांगत नाही नातेवाईकांमध्ये, आणि नातेवाईकही त्याचा उलटा अर्थ घेतात। त्याच्यामुळे असं आहे की माझं म्हणणं आहे की सगळ्यात मला एकच म्हणायचं आहे की ओव्हर प्रोटेक्शन नको, पण माइंड बिझी राहिलं, तुम्ही तुमच्या हॉबीज डेव्हलप केल्या, हे माइंड बिझी राहिलं तर काही म्हणजे याच्यात ओव्हरकम होता येतं। बस। Thank you, ma'am. Yes, I do agree with a lot of things you just said also. Again, social stigma, it's so many people saying things and we take it so seriously, especially when we are younger.
we take things so seriously what people say about us. So we have to take it with a pinch of salt. What you're saying is very true. Even about Amavasya and Purnima and things like that, it is debatable. And yes, it can be true too. So we don't know. So, yes, thank you so much. Doctor Sorry? doctor told me that just like a see there is the same process is means जैसे समुद्र पे होता है Oh. वैसे अपने ब्लड सर्कुलेशन पे भी होता है करके. Yes, the reaction of the moon. If the moon can affect the tides in the ocean, so can our body is 70% of water. So it definitely must be having some effect on us as a person. And epilepsy being a person being more vulnerable probably has more effect on a person with epilepsy. Yeah. Probably there is a logical reasoning to it. Yeah. So thank you so much, ma'am. That was a beautiful share. Thank you so much. Thanks. We have with us next Chetan. Chetan is the father of Arsha Gogavle, an epilepsy warrior since 12 years. Arsha had his first epilepsy attack on day 1 of his birth, which was due to negligence of the gynecologist and staff. Arsha was given only a little sugar water as feeding, which led to hypoglycemia. And when he got his first epilepsy attack, he turned black and blue, which was immediately reported. The hospital staff took it very lightly, saying that he might have been afraid, and that's the reason it might have happened. In 2009, it happened for the second time, twice, and the second time was a severe one, which they took seriously and rushed him to the Sayadri hospital. Till then, it had already taken its toll and got a minute bruise in his brain, which is now the prominence to his regular epilepsy. Then in 2011, he got a febrile attack, which later got converted into regular ones. Arsha is a very bright child. He goes to Sinhagarh Springdale School in Erindwani and is in the 6th standard. He loves to play outdoor games and tabla. He is on a couple of allopathic and homeopathic medication, due to which his epilepsy is more or less controlled. However, he does have a breakthrough seizures now and then. Yes, Chetan, tell us more. Hello. Yeah, I sincerely apologize as my network is very low. So No I have problem. come out in my garden and getting connected. First of all, I have here with me my son Ash. Yeah. See, everyone has already spoken a lot on seizures. So I come to a few points as Karen madam initially said कि स्कूल जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड फॉर्चुनेटली अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे बेटे का स्कूल है वो बहुत ही अच्छा स्कूल है दे आर वेरी सेंसिटिव एंड बेसिकली दे टेक all the care of my son, and there are 2 more children in the school who are epileptic, and means they see to it that whatever support they could as a school can give these children, they give them. Then एक श्रीकांत सर ने एक बात बताई थी कि don't give any doctor more than 2 years. I'll really agree to that कि कोई भी डॉक्टर को 2 साल बहुत ज्यादा हो गए एंड श्रीकांत सर ने ये भी बताया था कि पहले आप डॉक्टर से पूछो कि अगर ये ड्रग आपको पेशेंट को सूट नहीं होता है तो is it possible that we withdraw that drug and then introduce a new drug? Yes, that is very true. Basic मैंने ये देखा है कि कैसे होता है कि जब हमको या हमारे बच्चों को एपिलेप्सी का अटैक आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं बेसिक एंड वी इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर्स एंड
what happens, the doctor starts the medication, and then after what happens is वो medication हम जब देते हैं, the drug actually is not a cure of epilepsy, that I believe. It only suppresses the epilepsy. This is my belief. I am not the right person maybe to talk on it very firmly. Lekin allopathic drug only suppresses the epilepsy. It does not cure the epilepsy. तो अगर वो ड्रग से एपिलेप्सी सप्रेस नहीं होती है एंड दूसरा अटैक आता है, तो इमीडिएटली, एज वी आर वेरी सेंसिटिव टू आवर चिल्ड्रन, वी इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर. वो डॉक्टर ट्रीट्स आवर चिल्ड्रन एज गिनी पिग्स, एंड ही जस्ट गोज ऑन adding drugs or increasing the doses. No doctor can tell you firmly that if you administrate this, he'll be okay or he'll not have any problem of such a thing. But he just tries and goes on with the drugs. Ye suit nahi hota hai, we'll increase the dose, and as he comes, every chemical has its side effect, and these epilepsy drugs have a very drastic and major side effects, which the patient has to suffer. And what happens is, once the drug एक बार अंदर चले जाता है, तो बाहर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है. तो बाद में अगर वो ड्रग सूट नहीं होता है, तो उसका कैपेसिटी कंप्लीट होने के बाद, उसका डोज हाई लेवल पे जाने के बाद, डॉक्टर उसको दूसरा डोज ड्रग इंट्रोड्यूस करता है और तीसरा ड्रग इंट्रोड्यूस करता है. वो ये नहीं सोचता है कि अरे ये पहले से ही अगर ये पेशेंट ही इज सफरिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ थिंग्स ड्यू टू एपिलेप्सी, और ये ड्रग के कारण कितना सफर करेगा. So this is actually what, I won't say that you don't rush to the doctors, but this over possessiveness of the parents towards this particular disease does create a problem, because the doctor gets the chance to introduce a new drug or increase the doses, and which many a times does not suit the patients. Now actually मेरा बेटा जैसे बताया कि उसका बर्थ के टाइम उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, और उसके कारण उसके सिर में थोड़ी सी छोटा सा इंजरी हो गया, एंड उसके कारण अभी उसको ये एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं. तो अब हमने एलोपैथी डॉक्टर्स ट्राई किए, हमने काफी वेरियस डॉक्टर्स ट्राई किए, उसके बाद भी उसको आते थे अटैक्स, बट रेगुलर अटैक्स नहीं आते थे. फिर उसके बाद कुछ साल पहले हमने होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई की पैरेलली. होम्योपैथी मेडिसिन पैरेलली ट्राई करने के बाद उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि उसका एपिलेप्सी अटैक्स पूरी तरह से रुक गया, और ही वाज वेरी स्टेबल, ही वाज डूइंग वेरी गुड, वेरी वेरी नाइसली. देन वी स्टार्टेड रिड्यूसिंग his allopathic medicines, and we reduced it to overall 90% हमने reduce करा, और सिर्फ 5% जो मेडिसिन था वो लास्ट का 2.5 mg वो हमने जब निकाला, उसके बाद उसको एक मेजर अटैक आया. मेजर अटैक आने के बाद वो अटैक इतना काफी देर तक चल रहा था, उसके कारण हमको उसको एडमिट करना पड़ा. एडमिट करने के बाद वो पेडियाट्रिक हॉस्पिटल ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एपिलेप्टोलॉजिस्ट, उनको बताओ, उनका ट्रीटमेंट करने के बाद मींस वो जो ये करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको डिस्चार्ज दे देंगे. तो उसके बाद हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उसको सारी हिस्ट्री बताई. तो न्यूरोलॉजिस्ट टुक इट सो पर्सनली एंड सो ही गॉट सो एंग्री कि अरे तुम होते कौन हो, तुमने ये डोसेस कम क्यों किए. और मींस ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग कि तुम होम्योपैथिक के गुण गाने के लिए मेरे पास आए हो क्या, या मेरा इंसल्ट करने आए हो. होम्योपैथिक को कोई
स्टैंडिंग नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है, एंड ही गिव हिम 2 drugs which ruined his life. मीन्स वो ड्रग्स देने के बाद लाइफ में हमने इतना बुरा समय नहीं देखा जो उसके बाद हमने देखना शुरू किया। जिस लड़के को 3 महीने 4 महीने के बाद अटैक्स आते थे, एक आधा अटैक आता था, दिन में रोज 10-10 अटैक्स आना शुरू हुए, उसका बिहेवियर एकदम खराब होना शुरू हो गया, तो एग्रेसिवनेस आ गया, उसमें सुसाइडल मेंटालिटी डेवलप होना शुरू हो गई, और हमको पता ही चल नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर रहे थे, होम्योपैथी मेडिसिन एवरी 15 डेज वो फॉर्मुलेशन चेंज कर कर के उसको ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी होम्योपैथी मेडिसिन सूट नहीं कर रहा था, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट डे बाय डे उसकी हालत इतनी बुरी हो रही थी कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या। इनफैक्ट उसके आंखों में स्क्विंट आना, प्रोमिनेंट स्क्विंट आना चालू हो गया था, प्रोमिनेंट स्क्विंट आना चालू हो गया था, जो नॉर्मली मेंटली रिटार्डेड बच्चों के आंखों में दिखता है, तो वो स्क्विंट आना चालू हो गया था। और ये होते होते हम 9 महीने बीत गए। 9 महीने के बाद वो होम्योपैथी डॉक्टर को पता चला कि ये जो 2 ड्रग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स ही इज फेसिंग। और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए ऐसा ऐसे है, ये ड्रग्स आर द मेन कल्प्रिट, आपने ये डिसाइड करना है कि क्या करना है। आप कोई न्यूरोलॉजिस्ट की ये ले लेना, सलाह ले लेना, और उनके हिसाब से ये ड्रग्स बंद करने की कोशिश करना। फिर मैंने 2-3 न्यूरोलॉजिस्ट के साथ बात की, मैंने ये उनसे सलाह ली। हर एक न्यूरोलॉजिस्ट वो ड्रग कम करने के लिए डर रहा था। हर एक बोल रहा था, अरे ये अगर आप कम भी करोगे तो आप आपके लड़के को हाथ से गवाओगे। तो हमने सोचा ऐसे भी जाना है, वैसे भी जाना है, तो हमने वो रिस्क ले ली। डिस्पाइट ऑफ द डॉक्टर सेइंग नो, हमने थोड़ा उसका डोसेज कम करना शुरू किया। एंड बाय मार्च, ये अभी सॉरी दिसंबर 2020 उसके दोनों भी ड्रग्स 100% कम बंद कर दिए। हाँ, वो बंद करते समय हमने जो उसके पुराने वाले ड्रग्स थे वो थोड़े थोड़े बहुत कम इसमें मिलीग्राम्स में उसको इंट्रोड्यूस किए। अभी उसमें काफी सारे चेंजेस है। ही इज शोइंग पॉजिटिव चेंजेस एज वेल एज ही इज शोइंग अ बेटरमेंट देन व्हाट ही वाज अ ईयर बिफोर। और बेसिकली वो मीन्स आई डोंट नो, पता नहीं है कि कौन कितना मानता है। वो काफी मंत्रास भी बोलता है, श्लोकास भी रिसाइट करता है, और उसके कारण उसके इसमें काफी डेवलपमेंट्स, वो मंत्रास एंड श्लोकास के कारण उसके उसमें पर्सनालिटी में एंड उसके मेंटल स्टेट में भी काफी डेवलपमेंट्स आने शुरू हुए हैं। बेसिकली मैं बोलूँगा कि एक्चुअली पता नहीं है, आई हैव लॉस्ट बिलीफ with the doctors and the medicines. अभी पिछले एक साल से मैंने उसको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो इमीडिएटली वो ड्रग्स ये करते हैं, एंड नो डॉक्टर कैन टेल यू 100% दैट with this he will get cured. So what is going on is better. सिचुएशन थोड़ा सा वर्सन होने के बाद वी कैन थिंक, दिस इज व्हाट आई परसीव। एंड अभी पता नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द कंप्लीट उसका जो पिछले 1 साल वो जो ड्रग्स ले रहा था, तो उसका टोटल इफेक्ट न्यूट्रलाइज होने के लिए हम
we are waiting for that. Yet, abhi December se abhi tak he is not 100% neutralized. But yes, we are fortunate that we came to know things in time and we could do things in time. Thank you so much. Thank you, Chetan. Thank you so much for sharing with us. A big hug to Arsh over there. Yeah. He's been very patient with all of us. Say hi. Hello. Hi there, how are you? Good. Nice to see you. Thank you. And all the very best. God bless you Thank with you. very good health. And we'll see you again on Sunday. Yes, yes. Thank you. Thank you. I'd like to close the evening. Before that, I'd like to share one incident with you all. When my daughter was on drugs, some time ago, she was on at least six drugs at one point of time, very high dosages. And in the night, I would sit down and take out her medicines for the morning and for the night. So one day, and I also was on medications myself, and I was taking out medications for her night medicines, and by mistake, I took her medicines. I took all her medicines. Yes, so I can see you nodding away. It was terrible. I could not even stand up in the morning. It took me more than 48 hours to recover from that. I could not even go to the washroom. I could not even sit up to have a cup of tea. I was just lying in bed with my eyes closed, literally for 48 hours. I could not move a muscle. I can just imagine these people with so much medication that they are on still go out and work. Some of them still go out. I don't know how they do it. But this is one thing I went through it. I took the medication myself. It knocked me out, totally knocked me out for more than 48 hours. I was only just drinking water and trying to wash it out. In fact, my husband called the neurologist asking whether I should be admitted in hospital with such high doses of epilepsy medication. It was terrible. I can't explain to you how terrible the feeling was. The dizziness, the disorientation, the confusion in the head. I could not even sit up. I could not move a single muscle in my body. There's one feeling I think I'll never forget in my life, and I'll never do it again. So hats off to all the epilepsy patients who are still going to work and working on continuously. Just to reiterate the myths, I want to really mention it again, is epilepsy is not a spiritual possession. It is not contagious. People who are born with epilepsy, it's a cause of, is genetic. Anyone can develop epilepsy at any point of time in their life. It is not something only certain people are affected with. Epilepsy does not affect people's intelligence. If people have epilepsy which is severe, people not necessarily have frequent seizures. People with epilepsy can't go to work. It's a myth. People can go to work, people can excel in school, children and adults can lead normal lives. There is only one type of seizure, is a myth. There are 40 different types of seizures and convulsions. There's not any single type of seizure. And during a seizure, somebody says you can swallow your tongue, which is an absolute ridiculous myth. Please do not believe in it. Seizures are always medical emergencies, and you need to call for an emergency number. No, not all seizures call for emergencies. They can be taken care of at home. I'm sure you're all aware of things can be done at home too. So yes, so many myths and side effects. It's really crazy, some of us, and we are still taking those kind of medications. So that's even worse. So despite being one of the world's oldest known medical conditions, public fear and misunderstanding about epilepsy persists.
making many people reluctant to talk about it. That reluctance leads to lives lived in the shadows, lack of understanding about individual risk, discrimination in workplaces and communities, and a lack of funding for new therapies research. People with epilepsy die prematurely at a higher rate compared to the general population. For many people living with epilepsy, the misconceptions and discrimination can be more difficult to overcome than the seizures themselves. So thank you, everyone. Thank you for your... Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Please. Please allow me 3-4 minutes. I want to communicate with all four of you, but Khanna madam ने जो कहा, I am with her. लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा. जब हम त्रिवेंद्रम में थे, अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा रहे थे, हमने पूरा 1 महीना वहां बिताना पड़ा था, क्योंकि सर्जरी के लिए हमें स्लॉट कुछ दिन बाद का मिला. देखिए, वहां एक रिटायर्ड व्यक्ति आए थे. गुजरात की गवर्नमेंट जॉब में वो हुआ करते थे, वहां से रिटायर हुए थे. शायद 63-64 ईयर ओल्ड होंगे. और उनसे हम लोगों का सबका आदान प्रदान बहुत फ्रीक्वेंटली होता था. हम लोग इकट्ठे बैठते थे वहां पर, हॉस्पिटल के अंदर भी. तो हॉस्पिटल में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने उनसे पूछा कि भाई, आप तो 65 के हो गए, 63 के हो गए, अब क्या आप इस उम्र में भी ऑपरेशन कराना चाहेंगे, सर्जरी कराना चाहेंगे, क्योंकि ही वाज अ फिट केस फॉर सर्जरी. तो उन्होंने कहा, मुझे अगर 24 घंटे ही मिल जाए कि मैं सीजर फ्री रह सकूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं. और आपके लिए भी, और अबोली जी के लिए भी, और हर्षा के लिए, आर्ष के लिए, डोंट लूज होप. बट अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं अभी भी त्रिवेंद्रम जाऊंगा, क्योंकि मैंने जितनी भी केसेस उसके बाद में भेजी, एक तो खुद एमडी थी डॉक्टर, उनकी बेटी, तो ये सब के सब ठीक हुए और किसी की भी सर्जरी नहीं करनी पड़ी. किसी की भी सर्जरी नहीं करनी पड़ी. उनकी सिर्फ दवाइयां और उनके डोज ये एडजस्ट करके दिए उन लोगों ने. बट इट इज आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशंस. और बहुत ही, क्योंकि वो लोग सिर्फ यही करते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, नायर एपिलेप्सी सेंटर या एपिलेप्सी केयर यूनिट है वहां, जिसमें आपका ये होता है. तो दे आर रियली द बेस्ट इन होल ऑफ एशिया. और एक व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, उनका बोर्ड होता है, पैनल होता है. दे कॉल यू ऑन थर्सडेज, एंड ऑन थर्सडेज दे टेल यू अबाउट योर केस, और आपके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होते हैं. वी फेस्ड इट ट्वाइस. तो अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं जरूर जाऊंगा. जहां तक अबोली जी की बात है, अबोली जी सिर्फ 48 ईयर ओल्ड है और मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रहती हैं. मैं एचबी स्टेट सोनेगांव में रहता हूं. 3 किलोमीटर दूर हैं. वो अगर चाहे कभी भी, वो उनके मिस्टर जो भी आना चाहे, मिलना चाहे, freely we are available. First preference is only to epileptics and their caretakers in my life. आर्श का केस जो है, जो उसके पिताजी ने समझाया, वो बिल्कुल सही है. हम उसमें से कितनी बार गुजरे, 1 नहीं 2 नहीं, दसियों बार गुजरे हम उसमें से. और मैंने जैसे कहा कि एब्रप्ट दवाई न शुरू करें न बंद करें. और
एलोपैथ्स का ईगो इतना बड़ा है, उनको लगता है कि हम ही क्वालिफाइड हैं, बाकी सब क्वैक्स हैं, which is not very true at all. कितने ही मामलों में हम होम्योपैथी का ये करते हैं, आज भी हमारा ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी से। तो आर्श की केस तो वो तो अभी सिर्फ 10 साल का बच्चा है, ये तो महीने भर में ठीक होके लौटेगा वहां से। तो आप कंसिडर कीजिए जाने का और एक ये करने का, और प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। उनका ईमेल आईडी भी आपको, क्योंकि हो सकता है बदल गया हो, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं SCTIMST, which stands for Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology. So SCTIMST आपका त्रिवेंद्रम या श्री चित्रा हॉस्पिटल त्रिवेंद्रम, ये अगर डाल दें आप तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। उसमें आप ईमेल लीजिए, आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्टर अगर कोई आपकी पहचान के हैं, उनसे एक छोटा सा आपके केस पर राइट अप लीजिए, हिस्ट्री टाइप वो बना देंगे, कौन से ड्रग्स आपको दिए जा रहे हैं, कितना दिया जा रहा है वगैरह। और ये उनको अगर आप ईमेल करें, they will respond to you in 24 hours और maximum 48 hours, और वो वहां से पहले बताएंगे क्या किया जा सकता है, आपकी केस किस तरह की है। उसके बाद वो आपको चॉइस देंगे कि आप आ सकते हैं वहां, और उसके लिए आप सुटेबल, तो आप अपनी रिजर्वेशन इस तरह से बनाएंगे कि आप संडे नाइट या संडे इवनिंग त्रिवेंद्रम में पहुंच जाएं। ये रेलवे स्टेशन से ये हार्डली 3-3.5 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, और आपको उन दिनों तो हमको 15 रुपए लगे थे ऑटो में, आज शायद 25 लगेंगे, आराम से पहुंच सकते हैं। वहां हॉस्पिटल के नजदीक ही बहुत सारे होटल हैं, गुड होटल्स, इकोनॉमी होटल्स। उन दिनों 60-60 रुपए रूम से लेके कोई 300-350 हाईएस्ट था। आपको कूलर भी देगा, टीवी भी देगा, ये सारी फैसिलिटी। अभी सुना है और भी अच्छे होटल वहां बन गए हैं। सो प्लीज, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंट्रूड into your personal life, but at the same time I know that an epileptic would like to live one day without that fear that I'll get a seizure. So please consider it. And I have given my number, I have given my email ID. Please feel free to communicate. That's it. Thank you so much, sir. A big thank you to all of you here today Thank for you, sir. sharing with us your experiences and making us aware of so many stupidities that our society inevitably indulge in just because of lack of awareness. Thank you once again. Have a nice evening, Thank you, everyone. ma'am. Madam, can I Ma'am. talk just a minute for with sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. से बात करनी थी कि मेरी सर्जरी 2008 में हो गई है जसलोक हॉस्पिटल में। 2008 में सर्जरी की थी, उसके बाद भी डॉक्टर ने बताया कि बार बार अटैक आने की वजह से लेफ्ट टेम्पोरल भी अफेक्टेड है। तो बाद में सीजर्स आते थे, पर 2016 से एक भी सीजर नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू द सर्जरी जसलोक हॉस्पिटल, डॉक्टर जय देसाई एंड परेश जोशी। बहुत बढ़िया, सर्जरी मेरे हो गई है 2008 में। बहुत अच्छा। अभी दवाई भी बंद हो गई है, यानी नियर अबाउट कुछ भी नहीं है अभी दवाई। और तभी भी मैं गाड़ी चलाती थी, अभी भी तो गाड़ी चलाती हूँ, और घर के अभी मम्मी नहीं है तो सभी काम भी कर लेती हूँ, घर संभालना वगैरह सभी कर लेती हूँ। हमारी बेटी ने तो सर्जरी के बाद जब ये गया फ्री, तब हमने 3 साल बाद उसका लाइसेंस बनवाया 2 व्हीलर के लिए, और अभी भी वो सस्टेनेंस डोज पर है।
अच्छा, A small नहीं मेरा dose. अभी बिल्कुल ही दवाई नहीं है, मेरे टोटली दवाई अभी ये हो बहुत गई। बढ़िया। मगर अगर है भी सस्टेनेंस डोज पर अगर आप हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। नहीं, अभी कुछ भी दवाई नहीं है, टोटली ये बहुत है। अच्छा। और अभी ये में फियर भी नहीं लगता कि नहीं अटैक आएगा भी या कुछ ये होगा। लास्ट 3.5 years कुछ भी बहुत दवाई कुछ भी नहीं, ये नहीं है। यू आर लकी। Thank you, everyone. सर्जरी के वक्त ये हुआ था कि डॉक्टर ने एट द टाइम ऑफ सर्जरी उन्होंने बताया कि यू कैन विद पैरालिटिक या आंखों में स्क्विंट आ सकती है या आपकी मेमोरी जा सकती है। एक दिन पहले रात में बताया था बाल निकालने के बाद डॉक्टर ने। फिर भी मेरा विश्वास था कि नहीं, सर्जरी करने से मेरी तबीयत ठीक होने वाली है, इस वजह से मैंने सर्जरी के लिए तैयार हो गई। मम्मी वक्त बोल रही थी कि नहीं अभी नहीं करेंगे। I was ready for the surgery. My mind was prepared for the surgery. और I've gone through the surgery and अभी यानी पूरी ये हो गई है। Thank you, sir. That's good. Please stay healthy and stay safe now. Yeah, thanks. Thank you, everyone. Have a nice evening. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, Chetan. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thanks. Bye.